dear students, welcome back to my channel Sarika's Pharma Hub. डी फार्म सेकेंड ईयर का फार्माकोथेराप्यूटिक्स थियरी का एग्जाम होने वाला है 7 मई को. सो गेसिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं पार्ट 1 में 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो द क्वेश्चंस बी लाइक एक्सप्लेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. इसमें आप टाइप्स भी पढ़ लेना बेटा, हाइपरटेंशन के 3 टाइप्स है. Then what is SARS-CoV-2? Give clinical manifestation and non-pharmacological management of SARS-CoV-2. Next है defines STG. STG standard treatment guideline as per WHO. Mention any 4 advantages of STG. Okay. Next is what is dysmenorrhea? Write about its clinical manifestations. Next question like what is ALD? ALD is alcoholic liver disease. Write about its clinical manifestations and non-pharmacological management. Next question is define glaucoma, explain clinical manifestations and diagnosis of it. Next question is define epilepsy, discuss classification with suitable examples of anti-epileptics and types of epilepsy. आपको लिखना पड़ेगा students. Next question is define pharmacotherapeutics, mention the objectives and scope of pharmacotherapeutics. Okay. Next question is like what is COPD? Describe its etiopathogenesis, clinical manifestations and pharmacological treatment or management. Okay. Next question is write about clinical manifestation, causes, symptoms of megaloblastic anemia. Next is what is hyperlipidemia? Explain etiopathogenesis, clinical manifestations and diagnosis and treatment of it. Next question is explain clinical manifestations and pharmacological and non-pharmacological management of diabetes mellitus. Next is what is PCOS? Mention its clinical manifestations. Next is define emphysema and chronic bronchitis. Mention clinical manifestations of COPD. Next is discuss prevention of antimicrobial resistance. Next question is describe pharmacological and non-pharmacological management of hepatitis. Next question is what is TB? Explain etiopathogenesis and clinical manifestation of TB. Next question like what is PUD? PUD is peptic ulcer disease. Explain types and etiopathogenesis. Next is explain pharmacological management of iron deficiency anemia. Next question is explain depression, its clinical manifestation, etiopathogenesis and its treatment. Next is what is RA? RA is rheumatoid arthritis. Explain its etiopathogenesis and treatment भी पढ़ लेना students. Next is explain pharmacological management of Parkinson's disease. Next is discuss 3 classes of drugs used in treatment of peptic ulcer. Next is describe etiopathogenesis and treatment of anxiety. Next is write about etiopathogenesis of angina and its pharmacological management. Next is explain management of TB in accordance with DOT. डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट है, डायरेक्ट शॉर्ट एक्टिंग ऑब्जर्व ट्रीटमेंट आता है थेरेपी. व्हाट इज अस्थमा? एक्सप्लेन एटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अस्थमा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज GERD? ओके. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसीज होता है. Explain etiopathogenesis and clinical manifestations and treatment of GERD. Write pharmacological and non-pharmacological management of malaria. What is conjunctivitis? Write its management. इसमें pharmacological, non-pharmacological दोनों देने पड़ेंगे. Explain 3 stages of ALD. ALD is again alcoholic liver disease. 3 अलग अलग उसके टाइप्स या स्टेजेस है, वो देने हैं आपको. नेक्स्ट इज राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड कोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ CHF. Congestive heart failure. Okay. What are essential medicines? Scope of it. What is essential medicine? Write the scope of pharmacotherapeutics and explain about EBM. EBM is evidence-based medicine. Okay. Next question is explain treatment of hypothyroidism and hyperthyroidism. Next is discuss etiopathogenesis and treatment for UTI. Next question, UTI is urinary tract infection. Okay. Next is explain pathophysiology and clinical manifestation of HIV. Next is explain classes of drugs in pneumonia. Pneumonia के लिए classes drugs कौन से यूज होते हैं वो. Next question is what is premenstrual syndrome? Write its etiopathogenesis and treatment. Next question be like write 3 classes of drugs used
इन साइकोसिस, ठीक है, साइकोसिस में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं वो लिखना है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एटियोपैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. नेक्स्ट इज व्हाट इज एमआई. एमआई इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट इज आईबीडी. इंटेस्टिनल बॉवेल डिसीज होता है, एक्सप्लेन एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्केबीज एंड कॉज्ड. उसके किससे होता है, कॉज बाय एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटोपिक डर्माटाइटिस, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोराइसिस एंड एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इट. Next question is what is Alzheimer's disease, discuss treatment. Next is what is migraine, etiopathogenesis and treatment of it. Next question is what are essential medicine list and its importance. Next question is define pharmacokinetics, pharmacokinetics नहीं, pharmacotherapeutics है ये. Okay, define pharmacotherapeutics. Define pharmacotherapeutics, explain EBM, that is evidence based medicine. Next is what are infectious diseases, enlist the disease and explain clinical manifestation of any one disease. Then what is Crohn's disease, explain treatment. And what is stroke, एटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इट. ठीक है, स्ट्रोक का क्वेश्चन भी आ सकता है, ईबीएम का आ सकता है, एसटीजी का आ सकता है, आपको स्केबीज पे आ सकता है, देन एमआई पे आ सकता है आपको क्वेश्चन, आईबीडी पे आ सकता है, जीईआरडी पे आ सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, these are some of the questions students, so kindly just go through these questions, so this will be helpful for your final exams. So all the best dear students, take care, God bless you, keep watching my channel, thank you, take care.